Good evening and welcome to the Newshour Agenda. I'm Madhavdas G. Bahraich remains tense a day after clashes during the Durga idol immersion procession. Stone pelting and firing of shots were reported, which led to the killing of a 22-year-old man named Ram Gopal Mishra and leaving several injured. Angry protesters hit the streets today and resorted to arson, torching shops, hospitals and vehicles. Police deployment has been increased and senior police officials have been rushed to Bahraich to ensure that peace is maintained. Internet services have been suspended in the violence-hit area. Let's give you a glimpse of what really were the tense scenes that were there in Bahraich earlier in the day today. लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है, ये देखिए इसके बाहर भी आग लगी है। ये मेडिकल स्टोर है और एक हॉस्पिटल है। ये कुर्सियां अंदर पड़ी हुई हैं। ये एक बड़ी आग बसो उधर देखिए कैसे जो है अंदर आग की लपटें उठ रही हैं और किस तरीके से अंदर जो है वो सब तोड़फोड़ हुई है। ये कुर्सियां देखिए आप जल रही हैं अंदर की। तो ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कुछ दोबारा हो पाएगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा घटनाएं हुई हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे देखिए ये तोड़फोड़ हुई है और धुआं अभी भी कमरों के अंदर से धुआं निकल रहा है। आग लगी हुई है, कमरों के अंदर से धुआं अभी भी भरा हुआ है, धुएं निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन है कि जो पूरा इलाका है अब एक बार फिर उपद्रवकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और आग की घटनाएं जल हो रही हैं। अंदर अस्पतालों के अंदर देखिए ये पूरा बेड है और इसके अंदर पूरा आग लगा दिया गया है। ये जल रहा है अंदर, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से। और चूंकि धुआं बहुत ज्यादा इस एरिया में भर गया है तो एक कोशिश ये थी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल किया जाए, लेकिन यहाँ प्रशासन विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। We are speedily gaining control of the whole situation. Yes, we have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating trouble. Situation is under control? Yes, right now, yes, it is under control. Okay. It is under control. FIR has been registered in connection with the killing and violence that took place yesterday, and the cops have detained 30 people so far. FIR has been filed against 10 people, including 4 who are unidentified. Times Now spoke to the mother of Ram Gopal Mishra, the man who was killed in the violence. She alleges that her son was subjected to unspeakable brutality before being killed. माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, गोली से कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। Chief Minister Yogi Adityanath has assured strict action against those who are trying to spoil the atmosphere in Bahraich. He's also directed police and state administration to identify the rioters and take strict action against them. However, opposition is up in arms. Akhilesh Yadav and Samajwadi Party have linked the violence to the upcoming by-polls in the state, suggesting that it is part of BJP's ploy to create a communal atmosphere to prevent its defeat in these elections. Other India bloc leaders have echoed the same and blamed the BJP government for what happened in Bahraich. BJP, on the other hand, has blamed the violence on forces trying to weaken India with its toolkit. ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली, बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए। You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Let's take this across to our guest. Joining us is Tuhin A, national spokesperson of BJP. Dr. Vikram Singh is former DGP of UP. We have with us Akhilesh Yadav, national spokesperson of Samajwadi Party. Kamru Choudhury, political analyst, is with us. Let me start with you first, Akhilesh Yadav. Now, in the case of, Mr. Akhilesh Yadav, in the past when there have been killings, he has been quick to
condemn the killing of Manish Yadav, who was accused in a robbery. In this case, of course, in that case, he called it an encounter. In this particular case, why is he not with the equal amount of vigor condemning this killing is the question that is being asked by the BJP. नहीं, हम इस घटना में जिसकी मौत हुई है या जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवार के प्रति हमारे अंदर बहुत संवेदना है। और लेकिन जो स्थिति है वहां पे कि जो दंगा प्रभावित एरिया जहां पे इस तरीके की संभावनाएं होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस प्रशासन का जो फेल्योर है, आखिर वहां पे ठीक से काम क्यों नहीं किया गया? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? एलआईओ की क्या रिपोर्ट नहीं थी? किस तरीके की संभावनाएं हैं? ये शंका जाहिर की जा रही है चारों तरफ से, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कमजोर होता दिख रहा है, उस चीज की भी शंकाएं लोग इसमें देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कल और आज वहां पे जिस तरीके का प्रशासन पूरी तरह फेल्योर रहा है कंट्रोल करने में, सरकार अगर ठीक से ये कदम उठाती तो मुझे नहीं लगता कि बहराइच में इस तरीके की कोई घटनाएं घट पाती। उत्तर प्रदेश में सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटक रहा है। सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर को जमीन पर उतारने में असफल है। जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हम भी पूरे देश की प्रदेश की जनता से ये अपील करते हैं, पूरे बहराइच का जो देवी पाटन मंडल है, कि वहां के लोग शांति बनाए और भारतीय जनता पार्टी के साये में या उस तरीके की किसी भी आयोजन का हिस्सा ना बने। आपको पूरा अधिकार है, राज्य जो वहां पे जिला प्रशासन से उनसे भी सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, हर किसी व्यक्ति को और हर राजनीतिक दल को है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है ऑफिशियल एसपी मीडिया सेल वाले हैंडल से, और उसमें ऐसा कहा है कि इस व्यक्ति ने वहां पे कोई झंडा उतारा और बीजेपी नेताओं के कहने पर भगवा झंडा वहां लहराया। ऐसा करने के लिए वहां मौजूद भीड़ ने उसको मोटिवेट किया। गोपाल मिश्रा भाजपा राजनीति की बलि का बकरा बना, इसे कुछ देर बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर, अगर इस तरह की घटना में अगर आप डायरेक्टली कहेंगे कि आप अगर ऐसा कोई एक्ट करेंगे, चाहे झंडा हो या कुछ और हो, सवाल ये उठता है कि क्या लॉजिक दिया जा रहा है? क्या किसी के ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं किया जा सकता था? क्या पुलिस की ओर से एक्शन नहीं लिया जा सकता था? कंप्लेंट नहीं कर सकते थे? एफआईआर लॉन्च किया जा सकता था? माधव साहब, जो जिस परिवार ने जिसने अपना बेटा खोया है उस परिवार के प्रति हमारी भारी संवेदना है। लेकिन जो वहां पे पुलिस थी, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कुछ कृत्य कर रहा है तो पुलिस क्या कर रही थी वहां पे? उसे क्यों नहीं रोका गया? दीवार गिरा रहे हैं, झंडा उतार रहे हैं, इस तरीके का उपद्रव भरा जो माहौल तैयार किया गया, जिससे आज पूरा 4-5 जिलों में आज दंगा भड़का है, तो ये पुलिस की लापरवाही है ना माधव साहब? अगर इस तरीके का, क्योंकि जिस तरीके के जुलूस निकलते हैं वो पुलिस वहां पे भारी तादाद में पुलिस बल होता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, ताकि इस तरीके के आयोजनों को एक शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। तो पुलिस के प्रशासन का फेल्योर है या सरकार की मानसिकता है? यह सवाल तो खड़ा होता है ना माधव साहब। तुहिन सिन्हा, respond to that. It's either the failure of the administration, the police should have been there, should have been more proactive and prevented such incidents from taking place, number one. Number two, is it being done with a political intent as is being alleged by the Samajwadi Party? These are two questions coming to you from your principal opposition party in Uttar Pradesh. Good evening. Yeah, good evening, Madhav. Good evening, Madhav. Good evening, everybody. First of all, let me express my heartfelt condolences to the family members of Ram Gopal Yadav, Ram Gopal Mishra ji. The unspeakable brutality, that was unleashed upon him needs to be condemned in the harshest of languages. Every time that Samajwadi Party bounces back in Uttar Pradesh, criminals, radical elements and extremists and goons also bounce back. And this seems to be an example of it. But let me assure you that their bonhomie will be short-lived. In the next 2 days, exemplary action will follow. Madhav, sadly, this phenomena is not confined to Uttar Pradesh. In the last 2 or 3 days, similarly, immersion processions of Ma Durga have been vandalized in at least 6 places across the country to a serious extent. Sitamarhi in Bihar, Shampur, Havra, Bahraich, of course, Kaushambi in Uttar Pradesh, Belagavi, plus Garhwa in Jharkhand. So there seems to be a larger phenomena. The Hindu society is being provoked
The patience is being tested by certain radical elements, and that is a fact that also needs to be highlighted. You know, and sadly, I also need to add over here that some people who are justifying it by calling certain areas as Muslim areas need to be called out. In this country, there is no area as Muslim area. Entire area of Bharat belongs to Bharat Mata. You know, in his book in 1945 called Pakistan or the Partition of India, Baba Sahib Ambedkar had said that there are two primary reasons for Hindu-Muslim riots. One is cow slaughter and the other is music being played outside mosques. Sadly, that continues to be till today. You know, the fact is that no area of this country can be designated as Hindu area and Muslim area. If Hindus have a right to celebrate, they also have a right to take out processions to immerse their gods and goddesses in peace. And, you know, they can't be expected to suddenly, you know, hold back and take a different route every time. I think this mentality needs to change. All right, Kamru Choudhury, the mentality needs to change. At the end of the day, there have been different incidents. He cited a few. There have been incidents that have taken place in Bihar. There are incidents that have taken place in Karnataka, different parts of the country. And what is being stated here is that various processions of the Hindus have been targeted, is what the BJP is saying. And they're citing a series of such incidents to prove the case, to buttress the case. Please respond to him, Kamru Choudhury. Yeah, Madhav, first let me respond with the Bahraich incident. You know, just a few weeks ago, the Hindus and Muslims of Bahraich came together to eliminate few man-eating wolves who have been creating mayhem in the Bahraich area. तो ये किसी का नजर लग गई उसमें. People could not tolerate how come Hindus and Muslims are coming together in Bahraich with by-elections coming in the near future. This does not suit the agenda of the BJP and the RSS. You know, the most important point out here is that a united society on the caste or on the religious line spells doom for the BJP and the RSS. This is my first point. Second point, of course, everybody has got a right to celebrate. But you come across the incidents that have taken place. Very unfortunate, Madhav. I can say there is no words to condemn such incidents of violence or the life that was lost of Ram Gopal Mishra ji in Bahraich. This should not have happened. Nor any vandalism should have happened after that. We all know what happened exactly out there, because all these incidents had a definitive toolkit agenda behind it. You bring out a provocative song, play it in front of the mosques, in front of religious places of worship. In any case, I will just say one thing, Mr. Kamru Choudhury, and this is the point I'm making. The point is, whatever is the provocation, why, if you have faith in law and order system, approach the police, approach the courts. There are avenues for redressal. One is not saying that any responsible citizen should be engaging in provocation, but even if somebody does that mean that we immediately resort to violence? Never, never. You see, one example I will say, during the Nupur Sharma agitation case, the blasphemy one that you remember clearly, in Kanpur there was an agitation, wherein after that the UP administration went forward, arrested the father of Afrin Fatima, bulldozed her entire house and tried to play to the gallery of the majoritarians in Uttar Pradesh. That served a definite political purpose in Uttar Pradesh. After that, what happened? The court made him free of any culpability in that particular incident, just because they could not find any evidence to correlate him. But that poor man had lost his house. His children were on the streets during that time. Now, who justifies this? These are the incidents that the BJP government... Okay, got your point. Please respond to that. Can I rebut him, please? Madhav, I am afraid Mr. Choudhury is resorting to a very dangerous form of provocation on your show. You know, if he mentions a certain slogan being used, I can assure you that that would be 1 in 1,000 cases, or maybe 2 in 1,000 cases. But can he provide any proof that such a slogan was used in this particular instance? To just mix up different things to justify violence, I think, the Congress party and Mr. Choudhury should avoid such generalization. If any provocation has been used by the Hindu side, I condemn it on your show. But to make a generalization and say that, it is being used everywhere, I think that sort of a mentality only shows the Congress attempt to appease a certain section of society. Right. And in fact, let me come in on this. At the end of the day, we have a situation. Akhilesh Yadav ji, सवाल ये उठता है कि 20 गोलियां दागी गई हैं,
आपने उस बच्चे की माँ की स्टेटमेंट भी सुनी होगी, किस तरह का अत्याचार किया गया, कि इज दिस समथिंग दैट कैन एट द एंड ऑफ द डे बी एक्सेप्टेबल? You know, nobody is going to anyway justify any provocation. And I'm not even going to get into that debate, because the point is this, that the responsibility is there on all sides to maintain calm. In this situation, taking law into one's hands, you know, carrying out one killing, which has led to the spiral of violence, which is unfortunately playing out in Bahraich. माधव साहब, चाहे इस तरीके की कोई घटना हो, हमने पहले ही शुरुआत में कहा कि उस परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और मेरी कुदरत से ही कामना है कि परिवार को दुख सहने और उससे उभरने की क्षमता दे। चाहे मॉब लिंचिंग से कोई मुस्लिम समाज का हो या इस तरीके की घटनाओं में कोई हिंदू समाज का हो, और इस तरीके की घटनाएं करने वाले ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो दंगाई हैं, वो समाज विरोधी हैं, वो अपराधी हैं। और सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, जनता ने 20 करोड़ जनता ने आपको चुना है कि इस तरीके की घटनाओं को जमीन पे ना उतरने दें। ये सरकार का फेल्योर है माधव साहब, हम इसकी निंदा करते हैं। हर एक जिम्मेदार नागरिक इस तरीके की घटनाओं के खिलाफ है। वो देश के किसी हिस्से में हो रही है, ये घटनाएं नहीं जो लाउड म्यूजिक है ये प्रोवोकेशन है, ये भी तो गलत है ना सर? नहीं, लाउड म्यूजिक गलत है, जो इस तरीके के आयोजन है, क्योंकि एक परंपरा है सामाजिक, तो वहां पुलिस की ये जिम्मेदारी माधव साहब बनती है ना कि पुलिस ठीक से रास्ते को निकाल के ले जाए। अगर उस एरिया के अंदर कोई इस तरीके के लोग हैं तो उन्हें पहले हिरासत में ले। आपने पुलिस के रोल पे सवाल उठाया। डॉक्टर विक्रम सिंह, कम इन ऑन दिस, हाउ मच डू यू एग्री विद द रोल और द स्टेटमेंट coming in from the SP spokesperson that the police must take all responsibility? It was present, all of these processions were well known. Why didn't they act in time is the question coming in from Samajwadi Party. Gentleman has said, and Akhilesh Ji there's merit in what he says. Number one, there's the standard operating procedure. There are 6 documents in every police station in the country: the festival register, the Gunda register, the village crime notebook, the Tewhar register, and everything is fully documented. There is no matter of choice. A route that has to be taken, there can be no deviation in that. And when a procession passes by and which plays the DJ, then it is the job of the police to ensure that it passes the mosque in good time and they play at the lowest decibel. I repeat, at the lowest decibel, so as not to provoke anybody. Then the police are on the rooftops to ensure that there are no missiles, firearms, Molotov cocktails, and we now have the drone technology to help the police out. And I, for one, have never felt helpless ever. Let my friends level allegations and make allegations and counter allegations. But if the police are professional, they know what they have to do, then rest assured, it is not in anybody's right or anybody's power to take law in his own hands and make a mess of the law and order situation. At the end of the day, national unity and communal harmony are non-negotiable. And the police have a job to perform in ensuring area domination, proper patrolling, proper picketing, and also preventive arrest, which did not happen. Right. Imposition of 163 BNSS and making preventive arrest and imposing curfew in time. And again, using optimum force to dispel and disperse the crowd. All right, Dr. Vikram Singh, we'll have to leave it there. Tuhin, Sinha, Akhilesh Yadav, Kamru Choudhury. In fact, I'd like to thank all of you gentlemen for joining us this evening.